Government Constituted Commission has ordered something, then what happens now? He's saying that these production orders are not being complied with. I think under the Commission of Inquiry Act 2017, the Commission has the powers. Contempt. Power the judge of Supreme Court, sir. And if those powers were ever exercised. Object is not to send people to jail. No, but the object is to, if the people are illegally detained, to set them free. वो तो बात की बातें हैं. So I'm just punishment में हम मसले का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. That's right, sir. अगर हम punishment में फौरन चले गए तो मसले का हल नहीं होगा. That's right, sir. That's right. No, I'm just with regards to the production orders. I mean, I'd have to check with the Commission what happened. I mean, this is 2020, 10 December 2020. So, देखें, what we can, I'm just thinking now aloud, subject to what everyone says, that let the government, because production, you are directed, the government is directed in one form or the other, that you have to give us some response to a production order. That's right. Yes, no, whatever, no, we want to keep him, he's being tried in a court of law. I don't know, whatever the reason is. But it has to solicit a response, some response. Of course, this is not the responsibility of this government, because this, for instance, this production order is dated 2020. Yeah. 10th November 2020. So we don't put the burden on your heads, but at least we want to know what you have to offer. So we will certainly give you time. And ye sare production orders, if we tell the Commission to provide them to you in a tabulated form, name, parentage, address, whatever, so you can easily traceable, and then you can submit a comprehensive response report, unless you have some better solution. I think that's कमीशन के सामने जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं ये उनके सामने 193 के पावर है उनके पास और वो अगर इन्फोर्स करा नहीं सकते अपने ऑर्डर्स तो जो प्रोडक्शन ऑर्डर वो इशू कर रहे हैं I think what my Lord the Chief Justice, तो उनके पास इम्प्लीमेंटेशन का पावर तो है अंडर द 2017 एक्ट. आप बताएं, आप जरा माइक अपनी तरफ कर लें. जी, ये अगर जनाब पेज 29 मेरी पिटीशन जो है, नंबर इसको शायद अभी तक नहीं लगा. हम आपके ऑब्जेक्शंस ओवररूल कर दिए, आप उस पे उसी पे अटके हुए. मैं ये तजवीज़ देना चाह रहा हूँ. इसमें कौन सा है? ये पेज 29. अब नंबर, अच्छा नील नंबर नहीं लगा, वो नंबर के बारे में 20 हाँ मिल गया. उसमें तो आप कमीशन के मेंबर्स लिखे ना, आपने प्रपोज किया है कि ऐसा कमीशन मैंने वो उसकी जस्टिफिकेशन भी दी है. पैराग्राफ ग्राउंड एफ है. ये ग्राउंड एफ में जो लाइन 8वीं लाइन है, द पिटिशनर देयरफॉर urges this honorable court to set up an effective and purposeful commission in exercise of powers conferred upon this honorable court and Article 187 of the Constitution, Order 32, Rule 1 and 2, read with Order 36 of the Supreme Court Rules 1980, coupled with the principles of Civil Procedure Code, as was done by this honorable court in the case of Watan Party PLD 2012 Supreme Court, comprising of the following. Now, the ones that I suggest. देखिए Aitazaz, we are at the moment in a different point. You are suggesting a reconstitution of the commission. So, yes, it's not that we are disagreeing with you. At the moment, what we are saying is that the commission has apparently done some work. You may not be satisfied with it, but there are some production orders. So we want to ask the government, why have they not been complied with? That's the first thing. Number two, what we want to do from the commission is we want complete details. Just not give us numbers, give us names, etc. And periods is very important, in which period it has happened, because nobody wants to touch it if you put the burden on the present
set up, let's, for want of a better term, use this word, that why am I responsible for everyone? So then we want to break it up into setup. And of course, if you're not satisfied, which there is general dissatisfaction with the working of the commission, then we can call upon the government. They may consider reconstituting the commission. They may not want to reconstitute the commission, but we'll give them an opportunity to consider whether they want to or not want to. We don't want to become the government of Pakistan. सर मैं सिर्फ इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट को भी पता हो कि इस जो इनकी कमीशन है जो बनी हुई इसमें इनहेरेंट डिसेबिलिटीज और डिफेक्ट्स हैं। एतजाज साहब मैं आपको ये अर्ज करता आप हूं। चाहते हैं चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज बने जिसके 2 साल अभी भी रिटायरमेंट में बाकी हों, तो वो तो मुनासिब नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट अपनी जज के खिलाफ नहीं सर, मैं अर्ज करूं उसकी वजह यह है ये कमीशन जब भी रिटायर्ड जज को माफ कीजिए कोई नहीं सीरियसली लेगा, ये बड़ा सीरियस मैटर विद रिस्पेक्ट। Therefore, I propose the chairman should be a sitting judge of the Supreme Court with at least 2 years, ताकि वो 2 साल की tenure में वो कुछ कर सके। आपको पता है कितने केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में? जी हम ये जो चीजें, या तो फिर वही काम होगा कि वो जज या काम नहीं करेंगे अपना जो काम करना चाहिए, या फिर वो कमीशन का काम नहीं करेंगे। फिर आपका एतराज़ यही होगा कि जी क्योंकि नॉर्मल डे पे आपको पता है हम लोग को जितना काम होता है वो बड़ी मुश्किल से हम निकाल पाते हैं दिन को, ठीक है? तो वो अब नंबर ऑफ जजेस कितने हैं सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है, कितने बेंचेस हैं आपको पता है, कितने पेंडेंसी है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ये भी आपको पता है। तो ये ज़रूरी तो नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के जज में आकर के वो सारी खूबियाँ आ जाए कि वो कमीशन का काम भी कर ले। ये डेडिकेटेड कमीशन होना चाहिए जो फुल टाइम हो, नॉट पार्ट टाइम। सुप्रीम कोर्ट का जज को आपने बिठा तो दिया तो वो काम करेगा पार्ट टाइम, तो नेचुरली पार्ट टाइम ही कर सकता है, या तो उसको कहे अच्छा आप केस ना चलाओ बस यही काम करो। सर इस तरह तो इस वक्त तो हो ही कुछ नहीं रहा ना, वो पार्ट टाइम भी नहीं है, वो फुल टाइम। आपके तवज्जुह से इंशाल्लाह बेहतर करेंगे चीजें, एक दिन में तो नहीं होंगी ना, मगर जरा से रिटायर ब्रीदिंग स्पेस हम देना चाहते हैं अटॉर्नी जनरल को। जस्टिस जावेद इकबाल साहब ने आपने अपॉइंट किया था उनको? जी सर, मैं और क्या कहें आपको, तो आपकी हुकूमत ने, सॉरी आपने नहीं किया, तो अब आपकी हुकूमत ने थोड़ी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर ये रिक्रिमिनेशन वो अब नहीं छोड़ देना, अब हम थोड़ा सा इनको मौका तो देना कुछ बेहतरी लाने में। मैं मेरा जरा सुन ले जो स्ट्रक्चर है जी। अब आपने जो देखा है ना इसके, आपने जो प्रपोज किया प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जी पाकिस्तान बार, ये सिविल सोसाइटी आप जरा सुनिए ना, हमने बहुत दफा तजवीज़ें मांगी हैं, वो इंडिविजुअल पे होता है। कोई प्रेसिडेंट बहुत इंटरेस्टेड है, कोई प्रेसिडेंट कहता है यार ये क्या मुझे एक काम करना है मुफ्त में, ठीक है? तो वो भी देखें हम, ये बर्डन अब प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बलूचिस्तान, अब ये अगर ये बॉडी मीट ही नहीं करेगी, कभी काम ही नहीं करेगी, डेडिकेटेड लोग होना चाहिए जो कि अगर काम करें। आप असेंबली नहीं कर सकेंगे, इतने सारे मेंबर्स पूरे पाकिस्तान में। कल वो कहेगा जी मैं तो रिटायर हो गया, वो एक किस्म का टर्म होता है, हर साल इलेक्शन होते हैं तो वो इलेक्शनियरिंग में लग जाते हैं, फिर वो केसेस भी हमारे सामने नहीं कभी चलाते हैं कि जी अब इलेक्शन हो रहा है आप मेरा केस अर्जन कर दें। तो ये इसमें जरा सा हम देखें एतजाज साहब, I am at least very conservative. I want every functionary of the state to do its own job. We want to call upon the government of Pakistan to do its job. If they fail to do its job, then we can certainly take on suggestions on board, and they may agree with your suggestions or they may not agree with your suggestions, but it's primarily the responsibility of the government to appoint a commission. I can't tell the government to appoint this one. I can certainly suggest that maybe this person may not be appropriate. Your lordships can yourself appoint the commission. Commission appoint हुई है, देखिए वो 2 किस्म के कमीशन होते हैं ना, एक होता है कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत, वो पावर उनका है, वो गवर्नमेंट का है, हमारा पावर है, गवर्नमेंट का, एक आपका पावर है, आपकी पावर को एक्सरसाइज करें। और मैं इसमें जरा एक चीज जो मैंने सिविल सोसाइटी के मोस्ट प्रोमिनेंट एंड मोस्ट इफेक्टिव बंदे नॉमिनेट करने को कहा है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, द
Pakistan Bar Council, presidents of the four provinces. Why? Sir, they are. Abhi ye baki dekhenge the mix. Give me a reason. Reasons because they will. They have an urge to pursue. They will. और हमारे बार एसोसिएशन में हर साल इलेक्शन हो जाता है, तो नया बंदा आएगा, कोई हमारा नया मैंडेट लेके ये एक रोस्टर ऑफ द बार इलेक्शंस कंपटीशन में हो जाएगा। अरे वो आने देना, उनके कमेंट्स आते हैं, अगर सिविल सोसाइटी को वो ऐड करना, वो तो उनका काम है नॉमिनेट करना और इसको नोटिफाई करना ना। जी सर, चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है, चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स कमीशन, चेयरपर्सन नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, आप ये दो देखें, डायरेक्टर जनरल सेंटर, sorry to interrupt. ISI. एक second. Sorry to interrupt you. I was just given a note. There's a Judicial Commission of Pakistan meeting for Peshawar High Court judges. जो scheduled at 3 o'clock. ठीक है सर, ठीक है सर। We don't want to. We are taking this case seriously. ये हम इसको कल फुल कोर्ट तो नहीं, वो बेंच तो नहीं, 11 बजे लार्जर बेंच है। PFUJ को भी मैंने इसमें, PFUJ and two senior officers, senior most officers of the Inter-Services Intelligence and the IB. वो तो आप रिकॉन्स्टिट्यूट करने की बात करें ना, कमीशन, वो लेट द अटॉर्नी जनरल टेक सम इंस्ट्रक्शंस एंड उसमें देख सकते हैं, अगर वो नोटिफाई करें। अटॉर्नी जनरल आप ऐसा करें, आज we'll just treat it today as part heard, but you just make a note of the things that we want you to do, come back with. Monday को हमने भी कोई रखा ना केस, क्या रखा था? Sir, I'm appearing for the respondent in two of CPLAs that were filed by the government. एक मिनट, सलाउद्दीन होल्ड, थोड़ा सा रुक जाइए। मंडे को कुछ और है? There is presidential reference on Monday. ट्यूसडे को क्या? बेंच कंटिन्यू कर दी तो ट्यूसडे को कर देंगे। उससे भी नहीं पता हम चाहते हैं, ठीक है। आप कहाँ जा रहे हो? छोड़ना चाहते हो? कमाल। अच्छा, आप ऐसा करें, come up with some practical suggestions. Talk to Mr. Faisal Siddiqui. Take these production orders. बल्कि हम ऑर्डर डिक्लेयर ही कर देते हैं, लिखें। सॉरी सलाउद्दीन साहब, आप इस केस में? Sir, I am in CPLA 1503 and 1504. I am appearing for the respondent. The government had filed an appeal against orders regarding the students passed by the Islamabad High Court. I was informed that the government no longer wishes to press. जी सलाउद्दीन साहब, हमने विड्रॉ कर ली। These appeals have been withdrawn. अच्छा, ये बताइए, वो जो कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, उसने क्या काम किया? वो ऑर्डर रिव्यू हो गया क्या बाद में? That commission headed by Mr. Akhtar Mangal had furnished its report. The commission was constituted. नहीं, it was headed by क्या नाम है, सादिक संजरानी। नहीं sir, Mr. Akhtar Mangal ultimately headed it. Mr. Sanjani refused to head it. उसने कुछ किया या नहीं किया? नहीं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट एक फर्निश की है सर। वो किधर है? Sir, I'll place it on record. It is before the Islamabad High Court. अच्छा, The report was furnished and it is on इसमें record. लिखिए, वो ऑफिस कौन है, स्टेनो कहाँ है? ये रिकॉर्ड कर रहे, ठीक है। ये आपकी नंबर, उसको नंबर कर देते हैं, एतजाज एहसन फेडरल, आपकी एक है 161 है, और यही है ना? उनकी है, खुशदिल खान की है 124। सबसे पहला केस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हैं, ये क्या कह रहे हैं, विड्रॉ करना चाह रहे हैं। अच्छा, और ये इनकी अपील है खुशदिल खान की। इनका तो मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या कहना चाहना है। ये तो इनकी आपको अगले दिन सुना था, इनकी तो कुछ जाती मसले हैं, लेकिन हम जाती मसले नहीं सुनेंगे इस केस में। ये आते हैं, बताइए। तो हम ट्यूसडे को इसको रखेंगे, एंड वी वांट यू टू, वी विल डायरेक्ट दिस कमीशन
to provide you with the information, and you can seek any further information from them, what became of the production orders, and they have to submit a comprehensive report. My lord, if maybe given a little more time, because if they can share the production orders with me, let's say by tomorrow or day after, it might need a few days to get the report from the concerned agencies on each of the production orders. As I understand, there are about 700 of those. Over 700 of those, so it might require a little more time. CM appeal. All these matters pertain to, shall we keep your matters pending or shall we, आपकी भी 3 है ना, 1 2 3 जी my lord, ये withdraw कर 4 जी my lord, withdraw कर ले नहीं, इनसे पूछना अटॉर्नी जनरल से Ji, my lord, the instructions are to withdraw them, sir. The government of Pakistan, which means that the orders will revive. My lord, the orders were complied with. The Islamabad High Court's order, on the basis of which the commission was constituted, that commission was constituted, the commission has furnished its report. So these petitions have become CPLA infructuous. 1503, 1504, 1505 and 4333. नहीं, वो उन 3 का लिखें 2022, CPLA 4333 2021. पहले वो वाला लिख दें 2021 का. Learned Attorney General states that he is under instructions that through these CPLAs, orders passed by the Islamabad High Court were assailed. Full stop. Learned Attorney General states that he is under instructions to withdraw these petitions. Full stop. And further states that the orders have been implemented, and further states that the orders impugned therein have been implemented, and that he will be filing a concise statement in this regard. Full stop. Accordingly, these petitions are dismissed as withdrawn. However, Learned Attorney General to file concise statement as stated. Next paragraph लिखिए. ये इनका पहले लिखें. मेरे ख्याल में अब ये जो इनका नाम है, आमना जंजुआ साहब का पहले, आमना मसूद जंजुआ साहिबा का नाम लिखें. मिस लिखें या मिसेस लिखें आपके लिए, या मौसमात लिखें. MRS. Okay, MRS आमना मसूद जंजुआ एक केस में लिख दें. States that her husband, Mr. Masood Janjua, was disappeared on 30th July 2005 when he was to travel from Rawalpindi to Peshawar. Yes, my lord. And has not been heard ever since. And that my lord, it's and that she is not, and that she had approached the commission. क्या नाम है इसका? Commission on Enforced Disappearances. Commission of Inquiry on Enforced Disappearances. Commission of Inquiry on Enforced Disappearances. किधर था अभी पेज आपने बताया था? Notification. पेज बताया था ना 220 क्या था? 131. आपने किसी ने बताया था? 131. हाँ? 131. 131. वो तो law है. हाँ ठीक है. Had approached the Commission of Inquiry with an E on enforced capital E, capital D disappearances, which was notified by the government of Pakistan, by the federal government, but is not satisfied with the working of the Commission. Full stop.
others present. The commission comprises of, we are informed that the commission comprises of the following: Mohammed Sharif Virk. The chairperson is Javed Iqbal Sahab. Yes, ma'am. The chairperson of the commission is Mr. Justice Retired Javed Iqbal, Mr. Justice Retired Amanullah Yasin Zai, Mr. Justice Retired Zia Parvez, and Mr. Mohammed Sharif Virk. As member, वो members लिख दीजिएगा, उनका chairman लिख दीजिएगा. And however, she is not satisfied with the working of the commission. The other petitioners too have expressed their reservations about the effectiveness of the commission. ब्रैकेट में उसको एक दफा कमीशन करके ब्रैकेट में उसको कमीशन कर दीजिएगा, ठीक है? उसके ब्रैकेट में कमीशन. मिस्टर खालिद नसीम, आप सेक्रेटरी हैं, रजिस्ट्रार हैं? रजिस्ट्रार सर. Registrar of the commission, however, states that the commission has done considerable work and a number of persons, and due to its workings, a number of persons have been recovered / returned home. Full stop. इनका लिखने civil miscellaneous appeal number 161/2023. The registrar of the Supreme Court had raised objections on the maintainability of a constitutional petition filed by Mr. Aitazaz Ahsan. Full stop. The petition refers to petition also attends to the matter of missing persons. Full stop. As we have already taken notice of the petition filed by Mrs. Amna Masood Janjua, and to the extent that the petition filed by Mr. Aitazaz Ahsan attends to the case of missing persons, the office objection overruled. Let the office is directed to number the petition. इनका खुशनी खान का करेंगे ना, को गाड़ी कर देंगे ना, फिर के उसी ये करेंगे तो अभी नंबर करके उसको लाओ, उसी पर रखें, नंबर करेंगे तो फिर इंटरनेबिलिटी का इशू है ना, उसको उसी बुनियाद पर उड़ाएंगे ना, जब तुम्हारे को पर्सनल इशू है मिस्टेक बनेगा, उसको दिन समझेंगे कि पर्सनल मेंटेनेबिलिटी नहीं होगा, तो देख लो. अच्छा ठीक है, तो अच्छा फुल स्टॉप. The Secretary of the Commission. Similarly, another petition has been filed by Mr. Khushdil Khan Malik, but the same was also but in respect of the same, office objection was also raised, and he has filed CM appeal number 124/2022, which has raised a number of issues. However, we restrict the matter to the case of missing persons and if the other grievances raised therein, some of which are personal, will not be attended to. Full stop. And the office is subject to our observations in this regard. इतज़ाज़ साहब, और आपका भी यही होगा, वो वाले केसेस हम नहीं अटेंड करेंगे. नहीं, वो वाले केसेस जो है ना वो हम नहीं अटेंड करेंगे, आपको बता रहे हैं अभी से. हम मिसिंग पर्सन पे फोकस कर रहे हैं. इनका भी लिख दें टू बी नंबर्ड. That is not, as I submitted, that is not just an unusual case. Or in usual cases, they set and establish a pattern. And that pattern is the one that your Lordship has to address. If you have similar fact evidence,
साहब देखिए ना, I know, देखिए I'm very cognizant of our jurisdiction. We are exercising jurisdiction, habeas corpus jurisdiction. If a person comes home, habeas corpus finishes, then देखिए एक सेकंड ठहर जाइए ना. That doesn't mean you don't have a remedy. Then your remedy can be a criminal case. Your remedy can be tort. Your remedy can be sued for damages, but the Supreme Court's powers end on habeas corpus, the same power Supreme Court exercises as in Article 199. So the person comes home, who picked him up, what comes up, that person is at liberty to go and do whatever he wants to. But our job ends there. And we will certainly not hear you in respect of those who are not even before us. हम चाहते नहीं है ये सारा लिखें, अगर आप चाहते हैं हम लिख देंगे. देखिए उनको भी हमने खुशदिल खान को भी रोक दिया है और हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं एक इशू पे. अगर हम इतना डाइल्यूट करेंगे तो हम ये काम भी नहीं कर पाएंगे और कोई और काम भी नहीं कर पाएंगे. तो फोकस हम नहीं रखेंगे. ब्रॉड स्कोप है. अगर आप इससे मुतमईन नहीं, हम आपको रोकना नहीं चाह रहे, फिर हम आपका नंबर नहीं डालते हैं आज, फिर हम आपको लंबी तरफ सुनेंगे, फिर फैसला करेंगे. मैं क्योंकि अर्ज कर रहा हूँ, हमारी मीटिंग है. जी सर, तो आप करिए अर्ज. जनाब फरमाते हैं तो मीटिंग नहीं होती, मेरे होते मुझे नेक्स्ट डेट पे दो जुमले तो अर्ज कर लें. चले करिए. मेरा जो मामला है ये इंडिविजुअल या हेबस कॉर्पस का नहीं है. ये आपको बताना है एक पैटर्न नया शुरू हो गया है ऑफ कमिटिंग ए क्राइम विच यू आर कंसर्न्ड विद इन द ब्रॉडर पिटिशन. ये एक पैटर्न को, एक डिजाइन को एड्रेस करता है. दीज इंडिविजुअल्स एज सच डोंट मैटर कि कोई उनमें ये डार था या कोई फर्क हबीब था या कोई. इट इज द न्यू मोड ऑफ On what basis are you saying this? सर वो मैंने एग्जाम्पल Ayudar? No. Are you his lawyer? No, I am Then here. on what basis are you saying it? In public interest. No. In public interest. 4 लोगों के नाम पब्लिक इंटरेस्ट में आ गए. सर 4 लोगों के नहीं है ये. 4 लोगों के आपने नाम लिखे. 4 लोगों के नहीं, वो 4 से ज्यादा है वैसे, but they establish a pattern. 4 people. Of very not 4 sir, there are more than. आप पढ़ लेते हैं अभी आगे पढ़ लें. आदम और भट्टी 2 तो यही है. Ask the Attorney General to seek proper instructions, and he has already given a statement that let him take the instructions and submit the report on which whether the persons are being arrested or not in accordance with the law or without due process of law or against वो तो दूसरे केस में हमने किया है. नहीं, वो तो दूसरे केस में किया है. नहीं, मेरे केस में भी ये रिपोर्ट दे दे. वो दूसरा केस था, वो तो वो वाला था, वो कंटेंट वाला. इसमें तो नहीं किया. My lord, it was in this case. हाँ? It was in this case. इसी में ही था. नहीं, वो वाला केस, वो जो कंटेम्प्ट वाला था. नहीं, इसी नोटिस हो गया ना वो. हाँ? इसी में था. इसी बलोच मिसिंग It's a long day, but वो ये पेज 6 पे बलोच मिसिंग long day for you, पर्सन. I know. चले हम ये बात भी देखें. अच्छा वो और क्या रह गया था. The commission is directed to submit comprehensive report and provide copy of the same to the learned Attorney General, including all production orders issued by it, and the learned Attorney General to submit report if the said production orders have been complied with, and if not, why not. ठीक है. फिर हम बाकी चीजें बाद में कर लेंगे. कमीशन हमारा हो रहा है 3 बजे से, आप भी तो उसमें आ रहे हैं ना हमारे सामने. कुछ बातें रह गई है तो हम इसको बताएं. कितना टाइम दें आपको? क्योंकि फिर आप देख लीजिए इनकी कुछ एंजाइटी और कमीशन वगैरह आप देख लें. इफ यू आर सेटिस्फाइड विद द वर्किंग ऑफ द कमीशन और नॉट,
वो जब रिपोर्ट आपको देंगे उससे बातें आपके जहन में आ जाएंगी, फिर आप क्या करना चाहते हैं। तो कोई आप हमें डेट सजेस्ट कर दें। तो अब एक इनसे पूछते हैं। दूसरी बात, एक हमने जो नोटिस ली थी, मगर इन्होंने कहा था, मगर इन्होंने दे नॉट कंसर्न विद दैट, सॉरी बुरा ना माने शोएब साहिब साहब, हमने कहा था जी यहाँ से जो लोगों को उठाया गया था, उन्होंने कहा मैं ला रहा हूँ पिटिशन, मैं अमेंड कर रहा हूँ इसको, उन्होंने ना लाए पिटिशन और ना अमेंड किए। अगर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये उनका बुनियादी हकूक है, अगर वो कोई डिस्टर्ब कर रहे हैं वो एक अलग बात होती है। ये नहीं कि उनको धक्के मार से डंडे मार से उनको उठाया जाए। नहीं, उनको बहुत रुस्वा कर रहे हैं, बहुत रुस्वा किया है। एक सेकंड सर, आपने तो नहीं लिया है ना, इन्होंने वादा किया था वो करेंगे, नहीं किया उन्होंने पूरा वादा, हम अब अपने तौर पे कर रहे हैं। वी डोंट वांट दिस सॉर्ट ऑफ टैक्टिक्स employed by a responsible state. If someone wants to protest, let them protest to their heart's content. But you cannot just bundle, unless they are taking the law into their own hands, destroying public property or doing something violent. They have a right to protest. That right to protest must not be in any manner curtailed, let alone by force. ठीक है, that's the fundamental right. We may just add things in the thing. So now we have to go to the commission. Now we just propose a date. How much time do you want? No, my lord, if And if you, we can we appoint Mr. Faisal Siddiqui as amicus in this case? my lord, of course, Huh? of course. Mr. Faisal Siddiqui? You are already appearing for someone or not? No, I'm amicus in all these missing Okay, person then- cases then- before the Islamabad High Court. That is why I had this. The amicus has to foot his own bill. ये बलोच जो यहाँ आए हुए हैं ना जी, जस्ट मैंने विजिट किया सर, इट इज अ पैथेटिक सिस्टम। रात को तकरीर ना करें, कागज का टुकड़ा लाइए, फाइल कीजिए पिटिशन। वो मिस्टर फैसल सिद्दीकी एडवोकेट who is present in court and has rendered assistance is appointed as amicus to assist with the case. Whenever this case is fixed, his travel and staying costs will be borne by the government of Pakistan. Travel and staying costs, that's all. No fees. अच्छा, इसमें ये डेट कौन सी दे रहे हैं? ये बताइए अटॉर्नी जनरल, what will be a reasonable time? My lord, if the commission can give. हाँ, ये आपको देंगे, कितने दिन में आप दे सकते हैं पहले बताएं। इनको ये पूछ लेते हैं खालिद साहब, आप कितने दिन में इनको दे सकते हैं? ताकि वहाँ से खालिद साहब कितने दिन में आप इनको दे सकते हैं? कुछ आइडिया दे रहे हैं? टाइम दे रहे 2-3 भाई आपको कितने दिन में इनको कम से कम 3 हफ्ते दे रहे हैं, क्योंकि हमारा स्टाफ है हम नहीं, बात कर रहे हैं यार, एक स्टैंड रिपोर्ट अप भी देना नहीं है है। हमारे पास ना। नहीं 2-3 हफ्ते में क्या है, एक जल्दी हफ्ते का काम है, 8-10 दिन में कर ले, 8-10 दिन मैक्सिमम। कितने, सर कितना टाइम? 10 days, 10 to 15 days देते फिर सर। 10 to 15 विद इन 10 days। ठीक सर। ये 10 days में आपको देंगे, फिर आप कितना टाइम लेंगे? So if they can share production orders in, let's say, Within 10 days. share production orders जल्दी share कर ले, रिपोर्ट इन्होंने 10 दिन में देनी, प्रोडक्शन ऑर्डर्स 2 दिन में आ जाएंगे। आप हमें the case can be listed, let's say, after 2 weeks. 10 days के बाद 2 weeks। No, 2 weeks from now. ठीक है, फिर हम डेट तक लिख लेंगे, अपना जरा देख लेंगे कोई प्रोडक्शन ऑर्डर्स मैं इनसे ले लूंगा 2 हफ्ते में। Preferably, मिस्टर फैसल सिद्दीकी, If your lordship may just mention that the report which is to be submitted before this court on production orders must be on each of the cases. Yes, ये कोई general report No, ना we हो। don't want numbers. ये हमें, आप हमें नाम देंगे सबके, बल्कि इनको देंगे ना। सर एक गुजारिश और है सर जी। वो ये है, वो फखरुद्दीन जी इब्राहिम का करते थे कि मंडे अगर फिक्स करने लगते थे कोर्ट, तो वो कहते थे मंडे ना ट्यूसडे का। उनसे पूछते थे ये जब जज साहबान कि वाई नॉट मंडे, तो वो कहते थे केस तो पता नहीं चले ना चले, पर संडे खराब हो जाएगा, तो ट्यूसडे। ऐसे ये बताइए एतजाज साहब, आप हमारे सामने कभी आए और आपका केस ना चला हो? नहीं। एक एग्जांपल देते हैं। नहीं, अगर नहीं चला तो आपकी एडजमेंट की दरखास्त आई हुई होगी। हमारी तरफ से हम पूरा बोर्ड खत्म करके जाते हैं। अब आप देख लें 3:30 बजे हैं, ठीक है। अगर आज हम आपको देर तक सुनते हैं, मगर आज हमारी JCP की मीटिंग है, Very grateful. 3 बजे रखी हुई है। अदरवाइज वी ट्राई टू फिनिश द बोर्ड, एटलीस्ट आई ट्राई टू ह्यूमनली पॉसिबल। वन ऑफ आवर कोलीग्स इज नॉट वेल,
she is seriously unwell and she's come and sat in court. मतलब ब्लोच प्रोटेस्ट के बारे में सिर्फ एक बात करनी थी, ब्लोच प्रोटेस्ट के बारे में मतलब सिर्फ एक ब्लोच प्रोटेस्ट के बारे में, प्रोटेस्टर्स के बारे में बात करनी थी। उन्होंने ये कहा कि जी जो पिटीशन पेंडिंग है हमारी वही रिक्वेस्ट करें। आपने कुछ नहीं फाइल किया मगर हमने अटॉर्नी जनरल को ऑलरेडी कर दिया है, ही इज सो फार रिस्पॉन्स। ख्वाब जो तारीख रकम करते हैं, तारीख जो ये कहेगी हम सिर्फ बिस्किट्स नहीं बनाते हैं। EBM, nourishing lives, hearts and communities, makers of peak friends.